एक बात बताओ, कोलिजन क्लास में हो गया है, रेगुलर क्लास में? लाइक हेलो, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. सर नहीं, यू कैन कॉल मी भैया, आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर इटसेल्फ। तो ठीक है, कोलिजन्स स्टार्ट हो गया है, मैंने पूछा इज इट स्टार्टेड इन स्कूल, इन क्लास? Yes. कूल, ठीक है। ठीक है, तो टू बिगिन विद, बताओ मुझे, व्हाट डू यू थिंक कोलिजन इज? वन वर्ड व्हिच कम्स टू योर माइंड। वन। Collision is like when two body collapse. Two body collapse. Fine. Anyone else? Interaction of two bodies. I have a bit of cough, so I'll be sorry for that disturbance. हाँ, yes, किसी ने कुछ कहा? Interaction of two bodies. हाँ, very good. What's your name? जिसने अभी इंटरैक्शन कहा, who was he? चलो कोई नहीं, ठीक है, you are correct, you are perfectly correct. Collisions is a collision is an interaction between two bodies. जब हम आम भाषा में बात करते हैं तो we might think collision is something like physically touching, but in general it is actually the interaction between two bodies. I'm just searching for my notes. I'll be forwarding these notes to you, ठीक है, after this class मैं कर दूंगा। ठीक है, collisions जैसा जिसने भी कहा, he didn't tell me his name. Collisions is just an interaction between two bodies. दो bodies के बीच में किसी भी प्रकार का interaction. They may, जैसे पहले someone told me that collision is collapse. He probably meant collision is टकराना. तो टकराना इज अ कोलिजन। इफ यू थिंक ऑफ इट, टकराना क्या है? टकराना इज नथिंग, तुम्हारे एक हाथ के इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे हाथ के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्शन इज टकराना, है ना? तो दैट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स एंड दैट वी कॉल एज कोलिजन्स। This collisions, it's gonna be very useful to you when you study your advanced papers in second year or third year, third year, fifth semester, nuclear physics. वहाँ पे you do collisions के बहुत सारे topics. For example, तुमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ा है 11वीं में। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को कोलाइड करवाया गोल्ड न्यूक्लियस से, so that is a kind of collision. There are many types of collisions. यहाँ पे we'll be discussing collisions in their most general aspect. ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टीज को, ऐसे फॉर्मूलेज को डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट एवरी कोलिजन्स में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। भाई सॉरी अगेन। भाई कोलिजन्स को मैं दो कैटेगरीज में बांट सकता हूं। समथिंग कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन्स, elastic collisions, and something called as inelastic collisions. Okay, वैसे तो after this lecture, after this class, I'll send this क्या कहते हैं इसको, OneNote का PDF. But I would still appreciate if you have a pen and paper and you are noting these basic things down. ठीक है? So elastic collisions and inelastic collisions. अब तुमने कहा कि you have studied it, तो थोड़ा सा बता सकते हो what is elastic, what is inelastic? Elastic collisions are those in which kinetic energy is conserved. Hmm. Elastic collisions are those in which kinetic energy is not conserved.
Yup. I generally talk of kinetic itself, but in general, it is mechanical energy. So elastic collisions are those in which mechanical energy is conserved. Yeah, as she said. Okay, तुम लोग के नाम अभी I do not know. I haven't met most of you. So the energy, the collisions in which mechanical energy is conserved is called elastic collisions, and inelastic collision is a collision that is in which mechanical energy is not conserved, right? इसका mechanical energy is lost. Acha. If I talk of moment, I now completed the conservation of momentum. Have you? Conservation of momentum पढ़ लिया है? Yes. In absence Yes, of sir. any external force, if I do not have any external force acting on my system, the momentum remains conserved. So if I'm talking of a collision, there is a particle, there is another particle, they are moving towards each other and they interact somehow. I do not know how they are interacting. टकरा सकते हैं, they might interact electrically, they might interact किसी भी force से interact करते हैं, leave that for now. But since it's a particle, two particle system and there is no external force acting on it, so I can safely say that momentum is conserved in both of the collisions, elastic as well as inelastic. So linear momentum से ज़्यादा अच्छा, it's better we write linear momentum is conserved both in elastic and inelastic collisions. Since there is no external force, since there is no external force. Okay. If I talk of the total energy की बात करूं, मैकेनिकल एनर्जी की तो हमने बात की, लेकिन कई बार there's misconception कि in elastic collisions में energy is lost, mechanical energy is lost, the total energy shall I think remain conserved, right? जब दो bodies collide करेंगी, mechanical energy गई तो क्या हो गया? There may be sound energy, there may be heat energy generating from there, which of course we cannot take account of, therefore we call them inelastic. हम उसमें केवल mechanical energy को ही study कर सकते हैं easily. Okay. एक सिंपल सा केस करें 11वीं में यू मस्ट हैव डन collision, elastic collision in one dimension, elastic collision in one dimension. Elastic collisions in one dimensions में सपोज करो तुम्हारे पास कोई पार्टिकल है, इसका कोई मास है m ले लें, ठीक है, और इसका वेलोसिटी स्मॉल v, और मेरे पास कोई दूसरा मास है, थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया, और लेट्स से कि इसका जो मास है दैट इज कैपिटल M. आई होप यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन माय स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स. नहीं आता है तो डू लेट मी नो. एंड इसका वेलोसिटी इज बिग vi. तुम v1 v2 लेके कर सकते हो, इट्स जस्ट योर चॉइस. लेट्स से दिस इज द सिनेरियो बिफोर द कोलिजन. ये सिनेरियो कैसा है? बिफोर कोलिजन, जब तक इन दोनों ने आपस में कोई इंटरैक्ट नहीं किया है. दिस इज द सिनेरियो. Now, suppose that these particles interact somehow. Again, I am not interested in the type of interaction, but let's say they interact somehow and they change their velocities. Let's say this case is Vf for mass m, and this case is this capital M is Vf.
in a notification, waiting in lobby. You guys haven't got the Teams code? Teams code मिला होगा, उससे Teams join कर लो. Some people joined as a guest. So this is before collision, this is collision, and this is after collision. After collision. This is the scenario. So अब we have to study कि what happened, what happens to the velocities. We have to find expressions कि what is the velocity Vf and what is the velocity capital Vf using conservation of. यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे mechanical energy में there will be only kinetic energy. We are not under any potential. Imagine कि we are doing it on a, let's say, a horizontal track, or let's say we are in some hypothetical system where there is no gravity gradient, there is no electrostatic gradient or whatever. एक free space में कहीं पे हम इन दोनों को collide करवा रहे हैं. So there the scenario is. So I'm totally ignoring my potential energy for the time being and focusing on the kinetic part. ठीक है. So I can apply the conservation of momentum and conservation of kinetic energy in this problem to get the following set of equations. If I apply the conservation of momentum, it's a 1D problem. So I'll not write I cap, J cap, K cap, कुछ भी मुझे नहीं लिखना है. I'll take one direction as positive, दूसरा is negative. और मैंने imagine किया कि सारे velocities positive हैं. ये velocity भी positive, this one is positive, this one is positive, this one is positive. Therefore, I'll directly write the expression for momentum conservation. That is mvi plus capital M capital Vi is equal to mvf plus capital M capital Vf. This is my conservation of momentum. Let me call it as equation number 1. Acha ji. Let me write the equation for conservation of kinetic energy. Half m Vi square plus half m Vi square is equal to half m Vf square plus half m capital M Vf square. So I've got these two expressions. Any sort of questions are always welcome. ठीक है, अब इनको सॉल्व करूं क्या? You can do a bit of algebra with them and you will get a following set of equations. देखो मोमेंटम वाली इक्वेशन को लेट्स सी एक बार शुरू करते हैं, नहीं कर पाया तो I'll just quote the final answer. You will get the solution in any standard book, किसी भी बुक में मिल जाएगा. ठीक है, I arranged the momentum wala equation to get something like this. Also let me know कहीं पे मैं गलती करूँ तो. ठीक है, this is what it is and दूसरे equation से half 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 कट गया and I'll get something like m times Vi squared minus Vf squared is equal to capital M Vf squared minus Vi squared. Please keep a track कि capital V कहाँ पर है, small v कहाँ पर है. Let's call this set as equation number 3. Equation number 3 से मुझे काफी interesting result मिलेगा अगर मैं इन दोनों को divide कर दूं. If I divide this चौथे वाले को तीसरे वाले से, तो I'll get Vi plus Vf is equal to Vf plus capital Vi. Yes. And if I rearrange it a little bit, so I'll get something like Vi minus capital Vi is equal to negative of Vf minus capital Vf. Now this is some outstanding result. This result is quite interesting one. इस result का significance क्या है कि the relative velocity, basically this is relative velocity. Yes, Vi minus Vi, it is the relative velocity of these two objects. Vi is the velocity of chota wala mass and V capital Vi is the velocity of bada wala mass. So Vi minus Vi is relative velocity of chota wala mass
with respect to बड़ा वाला mass. So I can see that in a 1D elastic collision, the relative velocity of the two particles after the collision is negative of the relative velocity before the collision. इन दोनों particles का जो relative velocity after the collision है, it is just minus their relative velocity before the collision, which is a very beautiful result. इसके आगे अब तुम्हें क्या करना है, देखो यहां से vi का वैल्यू निकाल लो, छोटे वाले vi का, और ऊपर वाले इक्वेशन में डाल लो, और वहां से कहीं ना कहीं से यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट्स. क्योंकि ये हमने स्कूल लेवल पे किया रहता है, तो आई एम नॉट रियली interested in wasting time in solving those equations. Neither I am very confident, frankly, whether I'll get the correct result or not. But this is the result which I quote from any standard book. Okay. So m minus m times vi plus 2m over m plus m capital Vi. This is the expression I get for small vf, and for capital Vf by similar manner I'll get some expression like this. So these are the final results for these final velocities of the two colliding bodies elastically in one dimension. Is that fine, all of you? ठीक है? Yes. Okay, let me know if you want to ask anything. Questions are most welcome. Huh? This is meant to be for questions. हाँ जी, anyone? कुछ नहीं पूछना है? चलो ठीक है, it's fine. Now I discussed the collision of a system of two particles in one dimension, but I didn't mention one thing. I took a frame of reference which is fixed, मतलब fixed to my laboratory. So this I did the analysis in lab frame. लैब फ्रेम का मतलब क्या है? लैब फ्रेम इज द फ्रेम जो मेरे लैब में, लैब फ्रेम इसको नाम इसलिए दिया गया है कि इट इज जस्ट स्टैटिक, इट इज नॉट मूविंग विद द सिस्टम. ये बस एक स्टैटिक फ्रेम है जिसमें दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल्स अपने आपस में कोलाइड कर रहे हैं. If I make it in some 3D picture, so it is something like this. This is my x, y, z axis, and I have some particle here, some particle here, and they are running with their own sorry, with their own velocities, and they're interacting. My frame is static. I'm just standing and watching them. In this frame, the calculations are bit non-simple. मतलब तुम देख पा रहे हो कि when I started solving the equations, ultimately मुझे सीधा result कोट ही करना पड़ा. कहीं ना कहीं ये टेढ़ा मेढ़ा result आता जो याद रखना भी मुश्किल है, निकालना, solve करके निकालना भी मुश्किल है. So it is quite difficult to deal with collisions in lab frame. There is one frame called as center of mass frame. Can anyone tell me what is center of mass frame? Or what exactly center of mass पहले?
center of mass would be the point in the system where the force of the system is, all the forces are assumed to be applied on that particular point. Okay. And center of mass frame would be Your voice broke all, for me. I think my internet issue. yeah, am I audible now? सर जब दोनों Mr. मासेस का सेंटर ऑफ मास से रेफरेंस लेके चलेंगे Can you please confirm if you guys can hear me? मेरी आवाज आ रही है? Yeah, now we can. Earlier Yes, we sir. couldn't. अच्छा. Yes, Since sir. how long was it not fine? After you said that my voice was breaking, after that you were not audible. अच्छा, I was not audible. ठीक है, my bad. Okay, अभी it's fine ना? दोबारा से जाता है तो मुझे बताना है या write in the chat. ठीक है? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम, लक्ष्य was defining it correctly. पहले सेंटर ऑफ मास को कि it's a point, it's just a point in space where I can assume कि all the forces on the system are acting on that point or all the mass of the system is concentrated at that point. ठीक है. What is center of mass frame? Center of mass frame पढ़ा है? What is it? Basically, we will then assume all the quantities with respect to the center of mass. Like as if I'm sitting on the center of mass and watching the entire event. Yes, very good. Center of mass frame मतलब a coordinate axis which has its origin at the center of mass, not really origin, but most conventional point is origin. कि the center of mass is the origin and the coordinate system is moving as my particle system is moving. उस frame में we will be dealing with collisions and you will see that it makes the calculations and interpretations as well very intuitive, very simple. But before going to that, I just checked. हमने elastic collision discuss किया. Let's quickly discuss the inelastic collision. Inelastic collisions का math हमेशा simple होता है. देखो, perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. Can anyone tell me what is meant by a perfectly inelastic collision? Elastic collision, inelastic तो तुमने बताया था किसी ने starting में कि it is जिसमें mechanical energy is lost. What is perfectly inelastic now? Perfectly inelastic collisions in which after the collision the colliding bodies stick together and they move with a common velocity. Very good. Inelastic collision perfect उसको कहते हैं जब मेरे दो masses हैं, collide तो किए, मेरा mass है m, मेरा mass है capital M, ये किसी वेलोसिटी स्मॉल vi से मूव कर रहा था, ये किसी वेलोसिटी कैपिटल vi से मूव कर रहा था, इनके बीच में कोलिजन हुआ. दिस इज बिफोर कोलिजन. पार्डन मी फॉर माय टेरिबल हैंड राइटिंग. कहीं पे नहीं समझ आता है तो अगेन डू लेट मी नो. दिस इज छोटा वाला मास, दिस इज बड़ा वाला मास and they are moving with some velocity, let's say v. After collision they stick to each other. Any example? Anyone? Any example? Yeah, elastic का कोई example? Yes, sorry. Example of inelastic collision is that interaction of two balls when like one ball is at rest and another ball is moving with some velocity. It may be elastic and inelastic ना. मतलब you are saying something like carom. एक striker से strike किया तो जो गोटी है that can move along with the striker, that can move ahead as well. But ठीक है, perfectly inelastic का कोई और example anyone? A bullet fired onto a block, wooden block. हाँ, perfect. एक गोली लगती है किसी को, इमेजिन करो आर पार नहीं हुई, तो दैट्स एन inelastic collision.
right? It just striked whoever or whatever. Let's not kill anyone. Let's say it strike the mass. एक ब्लॉक को स्ट्राइक किया किसी बुलेट ने और उसमें बुलेट एम्बेड हो गई. It's an inelastic collision. This experiment is एक lecture है वॉल्टर लुवेन का है या किसका है on YouTube, and there he has done this experiment to measure the velocity of a bullet. So I recommend you going to that lecture, okay, after this class. ठीक है, let's do the math with it. करते हैं क्या होता है देखते हैं. मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व होगी. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, conservation of momentum give me m times उसका velocity plus capital M times उसका velocity बराबर दोनों मास times common velocity. यहां से मैं common velocity निकाल सकता हूं. ठीक है, is this fine? Clear है? चलो, I will give you one task. Find the loss in kinetic energy. Find the loss in kinetic energy in perfectly inelastic collision. यही वेरिएबल्स अज्यूम करो जो मैंने अज्यूम किए हैं, वी आई वी एफ वी, छोटा एम बड़ा एम, और तो कोई वेरिएबल नहीं है. इसकी टर्म्स में निकालो कि व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, द फाइनल एक्सप्रेशन. अगेन समवन फ्रॉम लॉबी. Those who are joining like a guest after this class, make sure कि you join the teams. ठीक है? सर दोनों काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट कर देंगे. इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी, फिर फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी बोथ मास का, उसको सेपरेट कर देंगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा. जी, this is Vansh. Good Vansh. ठीक है, तो do it. Is it 100% loss in kinetic energy? ना 100% कैसे? This is your name is Spandan. स्पंदना. ओके, सो इट्स नॉट 100%. देखो ना, इट्स स्टिल मूविंग, मूव तो कर ही रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी अभी भी बची हुई है इसके पास. ठीक है, 100% लॉस नहीं है. किसी स्पेशल केस में 100% लॉस होगा, वो हम देखेंगे. एक बार तुम लॉस निकालो. क्या करोगे? लॉस निकाल के सब मुझे तो कैसे ही बता पाओगे? इट्स ऑनलाइन क्लास, चैट में लिख दो. एक काम करता हूँ, मैं कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ, तुम ऑप्शंस लिखना चैट में और फटाफट करो इसे. पहला वाला वी छोटा है, हाँ, दूसरा वाला बड़ा है. दिक्कत है तो डू लेट मी नो. Okay, you have 4 options, and let's say you have 5 minutes. It's 11:34. At 39, I expect you to have sent in the chat, and there is already something in chat. Let me see.
इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी. अच्छा, मनीष हैज रिटन द मेथड. कैसे करेंगे? गुड मनीष. नाउ सॉल्व इट एंड लेट मी नो व्हाट इज द फाइनल आंसर. Okay, later they ask actually for the screenshots of this meet. मैं लैपटॉप से हूँ. Someone please take a screenshot and मुझे पर्सनल पे सेंड कर देना इस क्लास के बाद में. It sometimes has to upload on the website. Okay, I do have one answer. Spandan. Is it same Spandana? Is it you? Okay. B. Let's see. Others. Excuse me, sir. Hi. Hello. Yes. Hello. I'm not being able to access my chat because of some issue. Okay. Is that the problem with anyone else? Okay, so you have solved. Your name is? My name is Borishan. Bodhishan. Okay. And you have solved. What is your answer? Sir, B. B again. Okay. Others, do it. Raghavendra, you have raised your hand. You have got your answer. Yes, the answer is option B. Option B. We have 3 with B. Okay, still I have 3 minutes. Khushbu, very good. Again B. I am also not able to access the chat box. Acha. Borishan and Raghavendra, you have joined the meet as a guest. Sir, I joined via the link that was sent in WhatsApp. Okay, so matlab when you joined, it showed कि you have to take permission or something like that. ऐसा कुछ हुआ? I think No, sir. that should be the. अच्छा, I don't know. ठीक है. देखते हैं. I am Team also always has glitches. active. Sorry, who is this? Region, I am also not able to access the chat. Srijan. Okay. I don't know. पता नहीं क्या issue है. कोई नहीं है. What is your answer, Srijan then? D. D. Okay. A different one. ठीक है. I'll wait for 1 more minute. It's 11:39 का time दिया था. Let's see how many more can solve. ठीक है. Time's up. So maximum of you gave the answer B, and in fact B is the correct answer.
ठीक है, one of you got D, तो please check. I don't know what calculation glitch you did. It is simply the initial kinetic energy, that is half mvi square plus half m capital M vi का square minus half m plus m v का square, और v का value I just showed you by conservation of momentum. तो इसमें बस तुम्हें v का वैल्यू इनपुट करना है. व्हेन यू सॉल्व यू शुड प्रोबेबली गेट b. ठीक है, b ही आना चाहिए. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी दैट इज लॉस्ट. अच्छा, सो समवन सेड, आई फॉरगॉट, किसी ने तो कहा था कि शुडंट इट बी जीरो. सो इट शुड नॉट बी. इट विल बी जीरो इन विच केस? कैन यू जस्ट टेल मी लुकिंग एट द आंसर, कौन से केस में इट विल बी जीरो? Perfectly last. Final velocity become 0. फाइन. हाँ, व्हाट केस? अच्छा, ओके ओके ओके. Okay, there is a glitch in my question. Leave that. Forget मैंने कुछ भी पूछा. ठीक है, my bad. चलो, next is ठीक है, center of mass frame. So we have been allotted 3 lectures, I think, जिसमें से 2 will be needed for collisions, और एक में मुझे कहा गया है कि I have to start with rotational mechanics, basics of that. Let's see how can we finish that. All of you know about coefficient of restitution. एक टॉपिक बीच में मैंने जस्ट स्किप किया है, एक पेज का टॉपिक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. 11th में पढ़ाते हैं, तो यू मे चेक दैट. कोई क्वेश्चन है जो नहीं आता है? अच्छा, बाय द वे, आई डोंट नो हु जॉइंड लेट कैन सी इट और नॉट, बट माय फोन नंबर व्हाट्सएप ग्रुप से भी तुम्हें मिल गया होगा, एंड आई हैव रिटन इट इन दिस चैट. तो क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. ओके, ठीक है. सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करते हैं. 1D में बात करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल रहे. लेट्स से हमारे पास 2 पार्टिकल है. अगेन 2 पार्टिकल की बात करते हैं ताकि स्टिल मेरा कैलकुलेशन सिंपल रहे. मेरे पास 2 पार्टिकल हैं, एक m1 और एक m2, और ये दोनों v1 और v2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. तो क्या तुम मुझे बता सकते हो व्हाट इज द, पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? The center of mass coordinate, it is given by M1 V1 plus Oh, M2 V2 exactly. by M1 plus M2. हाँ नहीं, coordinate. The coordinate of center of mass. You said the velocity of सर पोजीशन Yeah, वेक्टर ले M1 लेंगे. MIRI by M1 sigma M. yes, very good. Sigma MIRI, sigma over I. Srijan, I think, na? MIRI divided by sigma over MI, and we can always write this in vector form. This particular case mein we have 2 systems, and they are moving in single direction, so I should write something like XCM. It will be M1 x1 plus M2 x2 divided by M1 plus M2. Now x1 जो है, it's a function of time. x2 is also a function of time. Yes, x1 जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है because the particles are moving. Let's say my okay, let's say my this is my frame, this is my x-axis, this is my y-axis, this is my z-axis, this is my lab frame. These velocities and all, they are in lab frame right now. I'll call this as lab frame. This is B, not P. Okay. So x1 will be changing because particle is moving somewhere. So x1 change होगा, yes or no? Can you please excuse for a minute, just a minute.
Okay, I'm very sorry to keep you guys waiting. Let's resume. हाँ, what was I saying कि क्योंकि m1 और m2 दोनों मूव कर रहे हैं तो both x1 and x2 they should be a function of time and therefore I should naturally expect कि my xcm is a function of time, it's not constant. So I can always find the velocity of center of mass. The velocity of center of mass is the derivative, the first derivative of the position of center of mass. And now position of center of mass, it's given by some this m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2 और अब वो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा जो किसी ने स्टार्टिंग में कहा था. You can solve it easily. m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2. This is the velocity with which the center of mass is moving. So assuming कि दोनों approximately same mass के हैं तो center of mass will be somewhere here. So this center of mass it will be moving with velocity VCM, right? And that VCM I have calculated. Any doubts still here? कुछ पूछना है? Hello, मैं audible? आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, cool. Let's see what we can do. देखो, can I find the velocity of 1? This is 1, not I. Velocity of 1 with respect to center of mass. कैसे निकालूंगा? Anyone has got any idea? अगर मुझे देखना है कि what is the velocity of a particle with respect to center of mass, that is I am trying to shift to center of mass frame. Yep, anyone has got any idea? How can I do that? Velocity of 1 minus velocity of qm. Yep, very good. Velocity of 1 minus velocity of center of mass. Velocity of 1 is velocity of 1. Velocity of center of mass is m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2. देखो कितना आता है? m1 v1 कट जाएगा मेरे ख्याल से और m2 रुको m1 v1 plus m2 v1 minus m1 v1 plus m2 v2 और minus m2 v2 divided by m1 plus m2 and m1 v1 and this m1 v1 they kill each other and you are left with m2 times v1 minus v2 divided by m1 plus m2, or you can just write m2 times v of 1 with respect to 2 divided by m1 plus m2. Yes or no? Clear है? v1 with respect to 2 is velocity of 1 in 2's frame. ठीक है, ऐसे ही कोई जना मुझे निकाल के बता सकता है कि what is velocity of 2 in center of mass frame? निकालो v2 minus vcm. Let's see if you guys can. M2 is M2 V21 upon M1 plus M2. No, shortcut नहीं मारने हैं. Minus It will be Sir, m1 minus v2 m1 v1 v2 upon m1 plus m2. Something like m1 over m1 plus m2 times v21 ऐसा? Yes. ठीक है. एवरीवन, किसी को डाउट है इसमें कैसे आया? ठीक है, नहीं है तो वील प्रोसीड. इसको ऑल्सो आई कैन राइट इट इन दिस मैनर, जैसा कोई बोल भी रहा था माइनस m1 करके बोल रहा था, लाइक दिस. इट्स ऑल सेम. नाउ कैन आई फाइंड मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम? इट विल बी m1. मास तो वही रहेगा ना, चाहे सेंटर ऑफ मास फ्रेम है चाहे लेबोरेटरी फ्रेम है. आई हैव शिफ्टेड टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम. देखो बहुत चालाकी से वी हैव शिफ्टेड टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम. दिस इज z, दिस इज x, दिस इज y, and this frame it's moving with velocity vcm. So this is center of mass frame. So now this pcm, how can I find out its value? It will be m1 v1 in center of mass frame plus m2
V2 in center of mass frame. What will be it? निकालो फटाफट. M1 times M2 by M1 plus M2 times V1, 2 plus M2 into minus M1 over M1 plus M2 into V1, 2. Find it out. 0. हाँ 0. 0. And it's a general result. Although we have derived it for one-dimensional case, this result is most general. It actually comes by definition of center of mass. Definition of center of mass ऐसी ही दी गई है कि उस फ्रेम में जब भी आप टोटल मोमेंटम निकाले तो it should come out to be 0. Understood? सेंटर ऑफ मास का परिभाषा ही यही है कि उस फ्रेम में द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इट शुड टर्न आउट टू बी 0. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो मोमेंटम ऑफ इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज 0. व्हाट डज दैट मीन? कैन आई फाइंड? अच्छा, इसीलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम को हम लोग जीरो मोमेंटम फ्रेम भी कहते हैं. जीरो मोमेंटम फ्रेम. ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम को अपन लोग जीरो मोमेंटम फ्रेम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, कोलिजन्स तो शायद मुझे नेक्स्ट क्लास में ही सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डिस्कस करने का चांस मिलेगा. आई विल डिस्कस कि P1 और P2 क्या हो गए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में. P1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम निकालो और P2 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम निकालो. P1 will be M1 in V1 CM and this will be M2 in V2 CM. Manish has written something in chat. M1 M2 over M1 plus M2 into V12. Okay. सिंपली तो है, V1 CM तो हमें पता है, ये रहा. बस it will be M1 M2 into V12 divided by M1 plus M2. एंड ऐसे ही इसका आ जाएगा M1 M2 divided by M1 plus M2 into minus V1, 2. So these results are actually very interesting, although we are deriving them in general and in particular for a one-dimensional case, but these results are very general. I think in Kleppner they must be given. ठीक है, वहाँ पे they must be derived for three-dimensional case. Kleppner ही पढ़ रहे होगे for mechanics, I hope so. So you can check that book. उसमें it must have been given. Therefore I am using this arrow. मैं result तो derive कर रहा हूँ 1D के लिए, लेकिन being a little bit चालाक, I am putting the arrow ताकि मैं अगले क्लास में use these results in general 2D collisions which we'll be doing next day. So 2D collisions are very difficult to handle in lab frame. Lab frame में you cannot simply imagine कि यार कितने सारे equations, कितने सारे conservation, क्या क्या करोगे. But center of mass frame,
5 minutes left in your meeting. Okay. It's 11:55. Center of mass frame में you will see कि 2D collisions they just are very simple. बहुत interesting results निकल के आते हैं. And that makes center of mass frame a natural choice for studying collisions. Collisions को पढ़ने के लिए center of mass frame is the best choice.